कर देती हूँ. स्टूडेंट्स विल कीप ज्वाइनिंग. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ऑलरेडी 1-2 मिनट तो हो ही गया है. Yes, 1 second. So hope you all can see the screen. Screen दिख रहा है आपको? Yes, it is visible. Okay. Okay. So आज हम लोग पहले renewable energy करेंगे. Types of renewable energy and all that. Maybe this might not have been highlighted in the syllabus sheet as such, but जो renewable energy का बहुत ज़्यादा चल रहा है and different kinds of sources of power, उसमें भी ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. And दूसरा इसके बाद हम लोग करेंगे terminology related to the power, that is IC engine, heat engines के बारे में to be precise. वो एक बार देखेंगे 2 stroke engine कैसा होता है, 4 stroke engine कैसा वर्क करता है and all that. ठीक है. Now moving to this renewable energy topic. Renewable energy, that is we obtain the energy from the renewable sources, that is which are naturally replenished on and it can be used for various purposes like your solar energy, wind energy, biomass energy, okay, tidal energy, geothermal energy, etc. Now again इसमें एक wind energy है which is actually on the farm work it is quite limited. Why? Because उस तरह का wind मिलते ही we'll get that electricity, we can generate that electricity, that is when the wind velocity is more than 32 kilometers per hour, windmills can be used for lifting water. So जितना ज़्यादा wind speed होगा उतना अच्छे से we can harness power from that. Okay. And दूसरा जब solar energy की बात होती है तो there we use photovoltaic cells, that is photo, that is produced by light, voltaic, that is converting that into electrical energy, and that we do with the help of some chemical reaction. ठीक है. And ये कुछ what you will say terms है, that's it. Okay. Now any hydrocarbon fuel, that is either solid, liquid or gas, that is produced from an organic matter, can be considered as a biofuel. ओके. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स का एग्जाम्पल है वुड. हम लोग वुड it can be used as fuel, no? It is also kind of biofuel and manure, okay, like your cow dung etc, that cow dung cakes etc we use for lighting the fire, so that also is a biofuel, that is in solids. Liquids में क्या है, like bioethanol, we extract some in the form of a liquid and that we use for fueling purpose, or biodiesel, gaseous form, that biogas. Okay, all these can be considered as biofuel because we are extracting this fuel from something, एक जमाने में वो living था, either now it is living or once it was a living organism. ठीक है. And biofuels can be produced from biomass such as corn or sugar, vegetable oils, waste, feedstocks, etc. And what is the importance of biofuels currently? Because they emit less carbon dioxide than the conventional fuels, and they can be blended with existing fuels as an effective way of reducing carbon dioxide emissions in the transport sector, for which अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. अभी E20 का कुछ चल रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय 2030 वो E30 तक होना चाहिए, मतलब 30% ऑफ द जो भी हम लोग पेट्रोल डीजल ये यूज करेंगे पेट्रोल, एंड उसमें 30% तो इथेनॉल ही होना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग. And here biofuels represent around 3% of road transport fuels that we can use in the world. And when we talk about the biofuels, based on the kind of or the type of generation techniques that we use in generating these biofuels, there are 4 types. First generation, second generation, third generation and fourth generation. Now first generation biofuels kya hai? These are those biofuels where we generate them directly from the crops और उसके जो सीड्स होते हैं एक्सेट्रा, लाइक योर ग्रेन्स, शुगर केन, कॉर्न, वी एक्सट्रैक्ट द बायोफ्यूल और इन दिस केस bioethanol through conventional methods like fermentation etc, and we take that. And लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑलरेडी वी आर फेसिंग
फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब उसमें हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग फूड के लिए यूज कर सकते हैं उसको भी हम लोग डाइवर्ट करेंगे बायोफ्यूल्स के लिए सो दैट वी कैन सेव द एनवायरमेंट। दैट्स नॉट सजेस्टेबल। एंड मोर ओवर दीज बायोफ्यूल्स आर जनरली नेगेटिव नेट एनर्जी गेन्स, क्योंकि उनको उगाने के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। ओके, सो जितना एनर्जी हम लोग उसको उनको उगाने के लिए लगा रहे हैं एंड देन वी आर यूजिंग, उससे क्या है इनफैक्ट नेगेटिव ही होगा। जो कार्बन वाला वो है मतलब ज्यादा ही रिलीज होगा देन व्हाट वी आर सेविंग। ओके, सो इसकी वजह से ये जनरली इट्स नॉट feasible or it's not suggestible also to go for first generation biofuels। लेकिन स्टार्टिंग में जब बायोफ्यूल्स का कॉन्सेप्ट आया था, this is what they used to use first generation biofuels and made from edible items as I've said, and it has high carbon content। एंड फूड वर्सेस फ्यूल का जो क्या बोलते हैं जो लड़ाई चल रही है दैट बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्लोली कमिंग आउट ऑफ दैट करेंटली। लेकिन जहाँ पे भी इंडिया में ये जब ओवर स्टॉकिंग हो जाता है या फिर खराब होता है, ऑल दैट स्टॉक्स जनरली दे आर सेंट फॉर बायोफ्यूल जनरेशन। अभी रिसेंटली मेज का गया था, राइस का भी गया था। ओके, yes, so that is all about first generation। second generation में क्या है, this also would be done from the crops only, but here the leftovers of the crops like your wood, organic waste, food crop waste or specific biomass crops that can generate these biofuels that we use. Now these are also aimed at being more cost competitive in relation to the existing fossil fuel। again इसमें जो ग्रीन हाउस गैस कंटेंट डेवलप होता है दैट इज द कार्बन एक्सेट्रा, दैट इज लेस देन द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बट स्टिल हाई, एंड दिस इज मेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड क्रॉप्स। बट अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव नेट एनर्जी गेन्स में थोड़ा सा इंक्रीज होता है यहाँ पे, लेकिन नॉट दैट मच की वी कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस। ये हो गया सेकेंड जनरेशन वाला। सेकेंड जनरेशन के बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, मतलब जो मेथड है। So third generation biofuels में here we take the advantage of specially engineered energy crops such as algae। जो बिल्कुल areas, जो land which is not suitable for food production etc., in those kind of lands we can take up the algae production which act as low cost, high energy and entirely renewable feedstock, and we can collect or produce more energy per acre than the conventional crops। ओके, और इसमें एडवांटेज क्या है, these can be manufactured into wide range of fuels such as diesel, petrol, jet fuel etc। मतलब इसका जो रेंज है डिफरेंट फ्यूल्स में ब्लेंड होने का या फिर ट्रांसफॉर्म करने का वो बहुत ही अच्छा है। एंड हियर इट इज कार्बन न्यूट्रल, दैट इज the carbon dioxide emitted is equal to the carbon dioxide sequestrated। that is जितना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फॉर एग्जाम्पल एल्गे है ना, फॉर दैट इट्स ग्रोथ एंड एक्सेट्रा फोटोसिंथेसिस के लिए इट इज ऑल टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड नाउ दैट इज बीइंग सेक्वेस्ट्रेटेड, मतलब वो उसी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मतलब बायोमास या किसी फॉर्म में, इट विल नॉट बी गिवन बैक दैट इज इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन व्हाइल बर्निंग और समथिंग। सो बिल्कुल भी इक्वल है। सो हियर it is, that's why it's called as carbon neutral। नेगेटिव में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेटेड। सेक्वेस्ट्रेटेड का मतलब यही है कि whatever the carbon dioxide that the plants are extracting from the atmosphere, it is not giving that back either in the form of solid, liquid or some way, it is capturing that and holding it in its biomass or some way। okay, but it doesn't go back to the atmosphere, that is called carbon sequestration। ठीक है, एंड हियर कार्बन न्यूट्रल में इट इज इक्वल, कार्बन नेगेटिव कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेटेड, सो इट इज पोटेंशियली कार्बन न्यूट्रल। ये हमें चाहिए अभी जो हम लोग बोलते हैं ना वी हैव टू बी कार्बन न्यूट्रल। सो हियर दिस इज वन ऑफ दैट बेस्ट बायोफ्यूल्स। अब इससे भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से हम लोग जनरेट करते हैं बायोफ्यूल्स यूजिंग द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। इसमें क्या है, we go for, see the process differs from second and third generation as at all stages of production the carbon dioxide is captured using processes such as oxy-fuel combustion etc, and this carbon dioxide would be stored away। see, first of all they do engineering of the crops,
So crops जब grow होंगे, that will take up all the carbon dioxide from the atmosphere. So high biomass yield होता है because we are engineering those crops artificially, and low lignin content and enhanced carbon storage capacity 30% more than the conventional crops. ठीक है. After that, through various chemical process like pyrolysis, gasification, digestion, etc., this would be converted into ultra clean carbon negative fuels. Okay, in between, whatever the carbon dioxide that it releases, that would be sequestrated. How it would be sequestrated? By, saving that carbon dioxide in depleted oil and gas fields or unmineralable coal seams, saline aquifers, etc. and उसमें कैप्चर कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. दिस इज कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड दिस वे उल्टा में जितना हम लोग फ्यूल बना रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रहे हैं, स्टोरिंग इट अवे समवेयर. कुछ इन द फॉर्म ऑफ बायोमास जिसे बायोफ्यूल्स यूज करते हैं, कुछ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन दैट इज कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज करके. ठीक है. देयर बाय वी आर गेटिंग अल्ट्रा क्लीन कार्बन नेगेटिव फ्यूल. सो हियर these are made from the genetically engineered crops and they are carbon negative. That is, the amount of carbon dioxide emitted is less than the carbon dioxide sequestrated, or in other terms, the amount of carbon dioxide sequestrated is more than the carbon dioxide emitted. So negative. Actually ये तो और भी अच्छी बात है. Okay. So here in this case, it not only captures the carbon dioxide from the atmosphere, but also reduces the carbon dioxide emissions by replacing the fossil fuels. So ये जो fourth generation biofuels है, ये one of the best biofuels है. Now advantages क्या है? Less flammable, increased life of live vehicle engine, क्योंकि जितना less inflammable होगा उतना less carbon deposits होंगे, इसका life expand कर सकते हैं. Less carbon emission, easy to source, genetically modified crops and जो भी जहाँ पे भी places are not used for the regular food production and all that, there you can use it. Economic security मिलेगा हमें, lower levels of pollution. Okay, because rather releasing they are extracting actually from the atmosphere. Cost benefit. Okay, ये है बायोफ्यूल्स का एडवांटेज. जैसे ये अगेन जो मैंने यहाँ पे दिया है उसी का नोट्स है, सो दैट आपके डिस्क्रिप्टिव में आपको ये यूज हो जाएगा. डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्यूचर प्राइस. मतलब अभी इतना कॉस्ट लगा रहे हैं, फ्यूचर में कुछ और आएगा तो दैट विल क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन इट्स प्राइसिंग. सो दैट वन. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. यस, जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप्स के लिए हम लोग जो भी वर्क करना एंड ऑल दैट, दैट माइट लीड टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. चेंजेस इन लैंड यूज एंड पोल्यूशन. हो सकता है कि जो फूड के लिए हम लोगों को यूज करना, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड्स, उनको भी डाइवर्ट कर रहे हैं. हु नोस. सो लेस सूटेबल फॉर यूज इन लो टेम्परेचर्स. बायोफ्यूल्स को लो टेम्परेचर्स में यूज करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ देयर they get solidified or their viscosity, it goes down in low temperatures, which would be difficult for them to work under that. See, it is more likely to attract moisture. That also is one of the problems in cold weathers, and also this will increase the microbial growth in it, and also the viscosity also goes down. ओके, ये हो गया हमारे बायोफ्यूल्स का डिफरेंट जनरेशंस. इम्पॉर्टेंट अगेन. नेक्स्ट कम्स इज सीड प्रोसेसिंग. ना वहाँ हमने कहाँ पे छोड़ा था? दैट वी हैव सक्सेसफुली हार्वेस्टेड, एवरीथिंग इज डन. नाउ सीड प्रोसेसिंग. जनरली सीड प्रोसेसिंग में क्या है? एम्स टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द सीड. And if we look at the chief characteristic features, if you say, of a good seed or good grain, it should be of uniform size, free of damage and diseases. It should be free of inert materials, etc., or any weed seed, anything that we can call it as, okay, this is good or best. And seed processing consists of generally cleaning the seeds, grading them, treating them, testing them and packaging them. सीड प्रोसेसिंग के लिए, अगर वही ग्रेन के लिए है तो जनरली क्लीन करके ट्रीट करके दे डायरेक्टली गो फॉर पैकेजिंग. ऑलवेज इट वुड बी डिफरेंट, क्योंकि सीड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग सीड की तरह यूज करेंगे. सो ऑब्वियसली उसको ग्रेड भी करना है, हमें गुड ग्रेड वाले सीड्स चाहिए, एंड टेस्टिंग भी करना है कि उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, फिजिकल प्योरिटी कितना है एंड ऑल दैट. एंड आफ्टर दैट दैट वुड बी पैकेज्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है.
नाउ फेजेस ऑफ सीड प्रोसेसिंग, सबसे फर्स्ट फेज होता है इधर स्कैल्पिंग, डीबियर्डिंग और हलिंग, दैट इज रिमूविंग द सीड कोट। अगर लाइक बार्ली है उसके उसमें अर्न्स होते हैं, मतलब वो एक appendages, okay, that we have to remove everything so that it will be, the seed would be free, right? For that debearding is done first, is to remove that outer that fruit and everything, right? That is called as hulling. All this that can be done. Now when you talk about scalping, it refers to a process in which the particles which are larger than the seed size are screened out and the seeds are separated in a vessel. So the grading of the seed means arranging the seeds according to the size and the quality. Debearded, as you can see, oats, barley, some vegetables, they have appendages or hairs that make them difficult to be processed, for which they are to be vigorously rubbed or abraded. This mechanical device, debearder, is used to rub the seeds and removing all those external appendages and hairs. Hulling means sesame seeds have an external coat that needs to be removed. This is called as a hull. And since we are removing that hull, it is called as hulling, and for that we use sesame huller, etc., that machinery. Now second phase, first phase हो गया ये all these process. Second phase में removal of inert materials or some weed seeds, other crop seeds, broken seeds, and after that air screen cleaner is used for this purpose. Okay, and third phase includes drying, treating and bagging. एक example यहाँ पे मैंने दिया है rice processing का. As you can see here, सबसे पहले spikelet आता है, okay, which the still it is attached to the head, the paddy grain. Okay, now that would be after harvest, it would be separated as paddy and the pedicel, that would be separated. After that this would be dehusked. Okay, dehusk means ये ऊपर वाला पूरा निकाल देते हैं, that will give you the brown rice and the husk. Again ये husk हम लोग use करते हैं for as a fuel purpose and all that. ठीक है. And again now this brown rice, ये जो है grain, it will be polished into white rice, and once you polish you will get bran and the embryo. Okay, this from this we extract the oil. It is highly nutritious. Okay. Now hulling, it is process of removing the husk and the bran of the paddy in one operation, and huller is that machine used for the hulling operations. And again it can be in hullers can be of two types, disc type huller and roller type hullers. Disc type में as we know the discs use करते हैं in that while hulling, and roller में क्या है, they'll send it through cylinders, and in that the removal of the hull or the outer skin is done. And और क्या है, ये तो मैंने कर दिया है. ओके, इट्स ओके. इतना एक एग्जाम्पल की तरह मैंने दिया है, ठीक है. एंड इसके साथ और कुछ इक्विपमेंट मशीनरी है दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कॉटन जिनिंग मशीन्स, ये सब दैट एज पर सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है दैट हाउ दे आर यूज्ड एंड ऑल दैट, बट एक लिस्ट है मेरे पास. ओके, देयर यू विल नो दैट कौन से इक्विपमेंट इज यूज फॉर विच पर्पस, लाइक जिनिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, ओके, एंड ऑल दैट. उसका एक टेबल है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ. इफ आई फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी, क्योंकि वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, कभी मैंने बना के रखा था. ओके, एंड अभी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज यू डोंट हैव वेरी इन डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एज सच. सो उतना आपके लिए चल जाएगा. जस्ट रिमाइंड मी टुमारो इन द क्लास इटसेल्फ, क्योंकि आज तो टाइम नहीं है टू सर्च एंड गेट दैट. सो एक बार मुझे रिमाइंड कीजिए, I'll look into that. ठीक है, but I'll give you that list, that would be helpful for you. एक सिंपल रिवीजन हो जाएगा उसी में आपका. नेक्स्ट आता है हमारा हीट इंजन्स. नाउ हियर हीट इंजन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग, जो बर्निंग फ्यूल होता है, that is that generates thermal energy. Okay, heat energy. From that heat energy is being transformed into mechanical energy. Because of that only your vehicle is moving, no? Those are the heat engines that we use in bikes, cars, etc. When we talk about the heat engines, there are two types of heat engines based on the combustion of the fuel. External combustion engine, internal combustion engine. Now what is this combustion? It's nothing but burning. Okay, it's called as combustion. In closed structures, if burning happens, it's called combustion. External combustion engine, here the working medium, that is the steam, is generated in a boiler located outside the engine and allowed it into the cylinder to operate the piston to do the mechanical work. मतलब बिल्कुल इंजन के बाहर होता है जो भी combustion होता है.
स्टीम इंजन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, क्योंकि बाहर इंजन के बाहर जो स्टीम डेवलप होता है दैट वुड बी provided, or it would be allowed into the cylinders in the engine, and then that would be converted into mechanical energy. ठीक है, because of which the train is able to move. Next आता internal combustion engine. Here the combustion of the fuel takes place inside the engine cylinder itself, and the heat is generated within the cylinder. The heat is added to the air inside the cylinder, and the pressure of the air is increased tremendously. Now this high pressure air moves the piston, okay, which rotates a crankshaft. मतलब that now, जैसे कल मैंने आपको समझाया था, जो भी पावर चाहिए हमें ट्रैक्टर से किसी भी मशीनरी को पास करने के लिए, फॉर दैट पीटीओ इज यूज्ड, राइट। और अगर वो अगर वो पावर टिलर है उसके लिए फ्लाई व्हील होता है। सो इसके लिए पावर टेक ऑफ शाफ्ट, एंड ट्रैक्टर के लिए एंड पावर टिलर के लिए इट इज फ्लाई व्हील दैट विल हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम द ट्रैक्टर और द पावर टिलर टू द मशीनरी दैट इज अटैच्ड टू इट, राइट। ओके, सिमिलरली जो ये हाई प्रेशर एयर है दैट मूव्स द पिस्टन, पिस्टन मीन्स यू नो द सॉलिड स्ट्रक्चर दैट कीप्स ऑन मूविंग इन द सिलेंडर, ओके, that will rotate that crankshaft. वो crankshaft कुछ नहीं, that is similar to this PTO or the flywheel only. Okay, now thus once it rotates that crankshaft, that transmits that energy. Now thus mechanical work is, मैं videos भी दिखाऊंगी, don't worry, just give me some time. ठीक है, and see here the crankshaft is an engine component that converts the linear reciprocating motion of the piston into rotary motion, and it is a main rotating component of the engine and is commonly made of ductile iron, and this is very very important. This is one of the most important parts in the engine that carries whatever the energy that is being created to the main parts. ठीक है, now ये हो गया हमारा based on the type of what you'll say combustion of the fuel. नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट इंजन आता है बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज्ड, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और गैस इंजन। डीजल इंजन क्या है? डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल सिंपल। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल। गैस इंजन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन गैसेस आर यूज्ड फॉर रनिंग द इंजन्स। ठीक है, थर्ड टाइप आता है बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ईदर स्पार्क इग्निशन, इसमें कार्बोरेटर टाइप इंजन होते हैं, और कंप्रेशन इग्निशन दैट इज इंजेक्टर टाइप होता है। स्पार्क इग्निशन में क्या है? मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इनटू द इंजन सिलेंडर एंड इग्निशन ऑफ द फ्यूल इज डन बाय यूजिंग द स्पार्क प्लग। ओके, इसमें से स्पार्क आता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन यू मूव, and that spark plug will ignite the fuel and that starts burning. Okay, combustion of fuel होते ही that thermal energy is generated, that thermal energy will later be converted into mechanical energy, right? So वो जो fuel mixture को जो burn करता है, how it is, and that is through spark ignition होता है वो। दूसरा है compression, मतलब वो जो air mixed with fuel को इतना compress करता है, okay, that it will combust, no, जो उसमें combustion होता है, burning होती है। ठीक है, now here in this spark ignition engine it produces spark and ignites air fuel mixture. Such combustion is called as constant volume combustion, मतलब उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो मिक्स हो रहा है। नाउ दैट इज अवेलेबल, स्पार्क से जो भी फायर जनरेट होता है, विद दैट स्पार्क इट विल बर्न। कंप्रेशन में क्या है? as I've said, it compresses, air is compressed into the engine cylinder. Due to this, the temperature of the compressed air rises to 70 to 90 degrees centigrade. At this stage, diesel is sprayed into the cylinder in fine particles. Now, due to this very high temperature, the fuel gets ignited. This type of combustion is called as constant pressure combustion. Okay, वहाँ volume constant है, यहाँ पे pressure constant है. Because the pressure inside the cylinder is almost constant when combustion is taking place. ठीक है, now next type of heat engine है based on working cycle, that is 4-stroke cycle engine or 2-stroke cycle engine.
फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या है, व्हेन द सिलेंडर इज कंप्लीटेड इन 2 revolutions, व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 revolutions ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, जो एनर्जी जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड एज फोर स्ट्रोक. व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 revolution ओनली, 1 revolution होता है, 2 स्ट्रोक्स होता है. ओके, 2 revolutions होता है 4 स्ट्रोक में एंड 4 स्ट्रोक्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इट्स कॉल्ड, ये 4 स्ट्रोक वाला साइकिल है. इसमें 4 स्ट्रोक्स कौन सा है, एक तो ये है इनटेक. In this case, the first thing that happens is air fuel mixture is drawn in. As you can see here, ये crankshaft है. Okay, this is the one that transmits the energy. Now, what happens is, when this rod, connecting rod, when this goes down, so that ये air fuel mixture है, that would be brought into this combustion chamber में. ठीक है, once the air fuel mixture comes into this combustion chamber, it keeps on moving. ना देखिए जैसे यहाँ मूव कर रही है, फर्स्ट स्टेज है, एंड यहाँ पे देखिए ये फ्यूल इसमें आ गया है. ठीक है, ना फ्यूल इसमें आते ही क्या हो रहा है, नाउ दिस इज गोइंग अप एंड कंप्रेशन हो रहा है. कंप्रेशन, एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड. ओके, यहाँ से स्पार्क प्लग से आपका स्पार्क हो रहा है, दैट एक्सप्लोजन forces the piston down. Now once explosion happens, it starts burning, so immediately this will push it down, and because of that pushing, this will push it, though power hai, that will help that power convert into mechanical energy through this crankshaft. ठीक है, and it starts moving. Now after that, the once it happens, what will happen, gases भी निकालना पड़ेगा, जो exhaust gases है, that is after burning there should be release of gases, that would be released here, because again it will come down. Okay, so once it come down, so air fuel mixture enters. Once, and after that, when it goes up, the valves are closed in, both the valves here, exhaust intake valve is open and exhaust valve is closed. In this case, both the valves are closed in compression and power mode. Okay, and once again it comes down, okay, this connecting rod, this will come back, and this time the exhaust gases valve will open, thereby releasing the exhaust gases. Okay, again it will go, and again the fuel is released, and this goes on till the time your vehicle is running. ठीक है, ये 4 स्ट्रोक का साइकिल है. एंड एक बार इसको समझेंगे ना, देखेंगे 4 स्टेप्स, इतना आप देख लेंगे ना, दिस वुड बी सफिशिएंट. एक बार देख लेते हैं फिर से. एज आई सेड, 4 मेजर स्ट्रोक्स है, suction stroke, compression stroke, power stroke and exhaust stroke. Suction stroke में क्या, during suction stroke inlet valve opens and the piston moves downward, because of which only the air or a mixture of air and fuel will be drawn into the cylinder, which we have seen. The exhaust valve remains in closed position during this stroke. The pressure in the engine is less than the atmospheric pressure during this stroke. Next आता है compression stroke. During this stroke, the piston moves upward. तो उससे क्या है, सिलेंडर में जो वो जो यहाँ नीचे जो दिखाया है ना, दिस वन, ओके, पिस्टन, दैट विल मूव अपवर्ड, देयर बाय क्रिएटिंग प्रेशर हियर. ठीक है, both the valves are in closed position here. The charge taken in the cylinder is compressed by the upward movement of the piston. If only air is compressed, as in the case of diesel engine, diesel is injected at the end of the compression stroke and ignition of the fuel takes place due to high pressure and temperature. Okay, वही पेट्रोल इंजन में we have the use of a spark plug. दैट्स वाई डीजल इंजन बहुत ही गर्म रहते हैं. ओके, एंड ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही वो होता है बिकॉज ऑफ दैट हाई कंप्रेशन. ठीक है, पेट्रोल इंजन में जनरली स्पार्क प्लग से होता है. कंप्रेशन स्ट्रोक होने के बाद नेक्स्ट पावर स्ट्रोक है. आफ्टर द इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, कॉजिंग वेरी हाई प्रेशर इन द सिलेंडर व्हिच पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड. ओके, नाउ व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउनवर्ड, okay, the connecting rod जो है, that transmits the power from the piston to the crankshaft and the crankshaft rotates. This will help in the mechanical work to be done. So mechanical work can be taped at the rotating crankshaft, and in this case also both the valves, that is inlet valve and the exhaust gas valve, both are still closed. अभी क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ड्यूरिंग द स्ट्रोक, नाउ द पिस्टन मूव्स अपवर्ड अगेन. लेकिन अभी क्या है, द गैस वॉट एवर दैट इज जनरेटेड, दैट वी हैव टू रिमूव. सो हियर इन दिस step, exhaust valve opens and exhaust gases go out through the exhaust valves opening. All the burnt gases go out of the engine, the cylinder becomes ready to receive the fresh charge. Again, when it goes down, now inlet will open and release the gas and fuel mixture, and again it repeats entire cycle.
So this is how it is done. And इसमें दो तरह के स्ट्रोक्स, अभी हमने ये तो 4 स्ट्रोक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 स्ट्रोक. नाउ इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट आर completed in 2 strokes of the piston, that is 1 revolution of the crankshaft. Very very important. There is no valve in this type of engine. Gas movement takes place through the holes called as ports in the cylinder. The crankcase of the engine is airtight in which the crankshaft rotates. ये stroke 1 है, which is also called as induction and compression stroke, and ये ignition and exhaust stroke है, ठीक है। Now इसमें क्या है, when सी इन दिस केस ये एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, ओके, दिस इज द इनलेट. व्हेन दिस गोस टू दिस साइड the transfer port is closed and यहाँ पे this inlet is open. So now this inlet will open and fresh fuel or air mix enter the crankcase, because the crankshaft is in a case and that will enter the crankcase, in this case this one, okay. And after that, spark plug कहाँ पे है? Yes, when the piston moves upwards it covers the 2 ports, the exhaust port and the transfer port, which are normally almost opposite to each other. एग्जॉस्ट पोर्ट ये है एंड ये व्हाट यू विल से दैट इनलेट पोर्ट, ओके, which are normally that this traps the charge of air fuel mixture drawn already in the cylinder, जो already आ गया है. Further upward movement of the piston compresses the charge and also uncovers the suction port. So इससे क्या है, completely जो already उसमें air fuel का जो mixture है, okay, that would be compressed and also it opens up the suction port. Now fresh mixture is drawn into this port into the crankcase, जो हमने देखा है. Just before the end of this stroke, the mixture of the cylinder is ignited by a spark plug. Thus during this stroke both suction and compression events are completed. एक ही stroke में दोनों ही events हो जाते हैं, देखिए. फर्स्ट स्ट्रोक में as you can see here it is entering and also it is being ignited. Now second stroke में क्या है, ignition and exhaust. Burning of the fuel raises the temperature and pressure of the gases which forces the piston down again to the cylinder. When the piston moves down it closes the suction port, trapping the fresh charge into the crankcase. During the previous upward stroke, जब upward stroke previous हुआ था, some fuel mixture, जो भी charge that has been trapped there. So further downward movement of the piston uncovers the first exhaust port and the transfer port. Now fresh charge in the crankcase moves into the cylinder through the transfer port, driving out the burnt gases through the exhaust port. Special shaped piston crown deflect the incoming mixture up around the cylinder so that it can help in driving out the exhaust gas. क्योंकि अगर वो दोनों उसी प्लेस में है, that would be difficult for them to remove the exhaust gases, for which उसके लिए एक specialized crown shaped piston होता है, that will help in that. During the downward stroke of the piston power and exhaust events are completed. So जब up होता है, जो compression and suction, that is suction or the induction, that is release of the air fuel mixture into that, एंड कंप्रेशन दोनों होते हैं. एंड सेकेंड डाउनवर्ड स्ट्रोक आते ही जो इग्निशन, दैट इज ऑल दैट बर्न्ड फ्यूल दैट विल हैपन, प्लस एग्जॉस्ट, दोनों ही होते हैं. देखिए जब ये नीचे आ गया है, नाउ दिस विल ओपन, ओके, एंड यहाँ से ये इनलेट पोर्ट तो क्लोज हो गया है. नाउ दिस आउटलेट पोर्ट जो है दैट विल ओपन एंड ऑल दिस बर्न्ड गैसेस जो है दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हियर. बर्न्ड गैसेस आर पुश्ड. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 2 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि दोनों स्ट्रोक्स दो ऑपरेशंस एक ही स्टेप में हो रहे हैं, ओके. नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी. एक तो है थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी मतलब कितना एनर्जी हम लोग, कितना फ्यूल से कितना एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. सो इन दिस केस द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 32 to 38%, मतलब higher, whereas a petrol engine varies from 25 to 32% only. The thermal efficiency of a heat engine is a percentage of heat energy that is transformed into the work. So the efficiency of even the best heat engines is very low, usually below 50% or often far below.
ओके, सो ये हमारा जो थर्मल एफिशिएंसी है ऑफ वेरियस इंजन, इट्स क्वाइट लेस. And other terms include horsepower. It is a rate of doing work, which is generally expressed in horsepower, HP. Mathematically speaking, horsepower is a force needed to move 550 pounds 1 foot in a second, or 33,000 pounds 1 foot in a minute. Okay. Conversion factors that we see here, 4,500 kg meters of work per minute, it is equal to 1 HP. So इस तरह से 1 HP is equal to 746 watts. एंड इसमें और एक है IHP, BHP, FHP, आप ये देखते रहते हो ना, दोज आर नथिंग बट इंडिकेटेड हॉर्स पावर. इट इज अ पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन, एंड इट इज अ पावर डेवलप्ड इन सिलेंडर विदाउट अकाउंटिंग फ्रिक्शनल लॉसेस. मतलब जो पूरा पूरा एनर्जी है विदाउट लुकिंग एट द फ्रिक्शनल लॉसेस, दैट इज कॉल्ड एज द इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो जनरली हाई रहता है. ओके, फ्रिक्शन लॉस में, हीट लॉस में, जब ट्रांसफर होता रहता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, आफ्टर दैट वॉट एवर दैट वी गेट, दैट इज द टोटल हॉर्स पावर. कहाँ पे है? ओके, दैट वुड बी योर BHP, क्योंकि BHP प्लस FHP इज IHP. BHP मीन्स ब्रेक हॉर्स पावर, दैट इज इट्स द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट. मतलब जो फ्रिक्शनल लॉसेस, लॉस ऑफ एनर्जी सब होने के बाद जो बचा हुआ एनर्जी है, दैट जो एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट है, बिकॉज वहां से डायरेक्टली इट विल स्टार्ट हेल्पिंग इन द मैकेनिकल एनर्जी वहां से, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द ब्रेक हॉर्स पावर, एंड इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग a dynamometer, which is also called as dyno. So IHP denotes actual power generated inside the cylinder after the combustion of the fuel, and BHP is the power to the crankshaft for the transmission of the vehicle. Okay, and the difference between both is the power that is wasted due to heat and friction. This is called as frictional horsepower. Okay, brake horsepower आपको पता ही है, indicated horsepower पता है. So indicated horsepower is equal to brake horsepower plus frictional horsepower. ठीक है. Power take off horsepower, now it is a power take off horsepower is the amount of horsepower available for running implements with the tractor. Okay, as I've said, that is PTO, and here PTO HP is around 80 to 85% of the tractor engine power. तो ट्रैक्टर का जितना भी इंजन पावर है उसमें 80 to 85% it can transmit to the machinery through which the machinery can work. ठीक है, एंड दैट इज डन थ्रू PTO shaft. ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ इंजन्स, एनर्जी एक्सेट्रा. थोड़ा सा आपको नो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देयर इटसेल्फ और भी बढ़िया है. और अभी हम लोग कर रहे हैं तो अगर आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत हो सकता है, तो प्लीज़ जब भी ये आपको PDF मिलेगा, गो थ्रू द कंटेंट. ओके, एक बार फिर से पढ़िए, एक बार वीडियोस फिर से देखिए, अगर फिर उसके बाद कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो. ओके, सिलेबस में है तो डेफिनेटली इट वुड बी इंपॉर्टेंट. एंड अर्लियर आई सेड दैट जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स कर रहे थे, डायरेक्टली वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द लैंड प्रिपरेशन, राइट? देन आई सेड दैट अगर कुछ नया क्रॉप, नया बिल्कुल एरिया, लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेना है, ओके, एंड ह्यूज स्केल एक्सेट्रा, जनरली द फार्मर फर्स्ट गोज फॉर लैंड लेवलिंग. ओके, लैंड लेवलिंग से क्या है, वाटर जो इरिगेशन है वो भी सही से होता है, क्योंकि अनडिलेटेड में क्या है दैट वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, एंड प्रोडक्शन में भी बहुत यूज़ होता है. एज यू कैन सी हियर, इंक्रीमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड वाटर सेविंग थ्रू लेजर लैंड लेवलिंग, इट्स अ टाइप ऑफ नो लैंड लेवलिंग ओनली. सो उसमें देखिए लेजर लेवल्ड फील्ड में ये है इसका टन्स पर हेक्टेयर, and this is without, and this is a water saving that can be done as high as 38%. Okay, so this is how it helps it, and for which land leveling is must. So land leveling is a measure used in surface irrigation such as basin and furrow irrigation, etc. Preparing the irrigation plot in a way that no highs or no low spots disturb the uniform distribution of irrigation water, and it also ensures an optimal slope for water movement. Okay, as we have already seen that जब भी water हम लोग release करते हैं field में, always little bit slope needs to be given
तो यहाँ से अगर वाटर रिलीज हो रहा है, सो देर शुड बी स्लाइट, वेरी स्लाइट स्लोप हियर, सो दैट वाटर मूवमेंट वुड बी इजी एंड इवन द टेल एंड ऑफ दैट फील्ड शुड रिसीव वाटर। ओके, वहाँ जो भी प्लांट्स है। So the characteristic of a good seed bed are uniformly firm soil to a depth of 5 inches, adequate soil moisture and weed free. Along with that, leveling. लेवल भी बहुत सही से होना चाहिए एंड एक इम्पॉर्टेंट है एंड दिस विल हेल्प ना, क्यों, इससे क्या होगा, एक तो डेप्थ अच्छा है, लेवलिंग अच्छी है, इसकी वजह से वॉट एवर द वाटर मूवमेंट दैट इज देयर दैट वुड बी वेरी गुड एंड पूरा जहां तक रूट्स है वहां तक वो बिल्कुल मॉइस्चर इट विल बी एबल टू रीच, देयर बाय मेकिंग इट अवेलेबल टू द प्लांट्स, सिंपलर टर्म्स। नाउ लैंड लेवलिंग में भी जैसे हमने बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में देखा है कि मैन्युअली भी होता है, एनिमल ड्रॉन होता है, या फिर लेटेस्ट मैकेनाइज्ड वाले भी है। सो इसी तरह से लैंड लेवलिंग में भी उसी तरह से, जैसे सॉइल स्कूप्स है। Okay, here these are used to excavate ditches, clearing the drains and doing cut and fill jobs in simpler terms. As you can see, ये एक एनिमल ड्रॉन सॉइल स्कूप है, ये एक ट्रैक्टर ड्रॉन है। तो ये क्या है, जैसे जैसे ये मूव करता रहता है, अगर यहाँ पे कोई अंडुलेशन है, मतलब एक वो है, सो इट विल कट इट ऑफ एंड आगे जाके कुछ ऐसा लो है तो ये जो कट ऑफ वाला सॉइल हो उसमें डाल देता है, सो कट एंड फिल वाला जॉब्स करता है। एंड जो इसका कटिंग ब्लेड है, इसका एंगल जनरली इट वेरीज फ्रॉम 12 to 15 डिग्रीज। ओके, दूसरा टाइप का आता है बक स्क्रेपर। ये आप जो फोटो देख रहे हो, दिस इज ऑफ बक स्क्रेपर। जनरली एनिमल ड्रोन्स होते हैं, यूज फॉर लैंड ग्रेडिंग एंड लेवलिंग फील्ड्स ऑफ स्मॉल और मीडियम साइजेस। सॉइल स्कूप भी वैसा ही है, छोटे फील्ड्स में ही ये यूज होता है। Buck scraper is a simple implement for land grading. The operator can control the depth of cuts depending on the load of the scraper. See, यहाँ पे ये चेन है, ओके, यहाँ से यस एनिमल उसको वो करते हैं एंड दिस अ बोर्ड जॉइंट, ये टेल बोर्ड इसके लिए जॉइंट होता है एंड व्हेन इट ड्रैग्स व्हाट विल हैपन, इस पे अगर डेप्थ में कट करना है तो ऑन दिस दे विल पुट वेट। ओके, सो द ऑपरेटर स्टैंड्स ऑन द स्क्रेपर बोर्ड, ये हमारा जो स्क्रेपर बोर्ड है उसके ऊपर वो खड़े होते, समटाइम्स इट इज यूज्ड टू मूव द सॉइल एज वेल, देयर बाय इट विल कट द सॉइल, जहाँ पे भी ऊपर है या फिर अगर नीचे है तो दैट विल कीप ऑन फिलिंग दैट। सो एक वो होता है एंड लैंड लेवलिंग करते हैं लेवलिंग बोर्ड से भी। कल इफ यू रिमेम्बर जब हम लोग कुछ वीडियोस में दिखा रही थी तो साइमल्टेनियसली जब वो चल रहा था पीछे एक लेवलिंग बोर्ड भी था। ओके राइट, वी हैव सीन दैट। सो हियर दिस इज, ये मैनुअल वाला है एंड जनरली लेवलिंग बोर्ड्स एज यू कैन सी हियर सॉइल को लेवल करने के लिए करते हैं, स्पेशली आफ्टर प्लाविंग, सो दैट सीड सोइंग बहुत आसानी से हो जाए। okay, so here a ratio of 40 kg weight per meter width of leveling board gives the best results, important। जनरली एक वुडन बोर्ड होता है, लेंथ 2 meters, width 0.4 meters and thickness 0.3 meters, provided with side wings, hitching braces and handle, and as you can see here while it moves ये बिल्कुल लेवल करते हुए जाता है। ओके, एंड दूसरा इफ इसका थोड़ा और हमें कटिंग भी करना है सॉइल का, देन द पर्सन कैन स्टैंड ऑन दिस, ओके, एंड देन मूव, सो दैट उसकी वेट की वजह से नीचे है वो कटिंग, सॉइल कटिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक क्वेरी आया है, ओके, बनाना स्टेम वही टाई करके वो दैट लॉग यू विल बी टेकिंग इट नो पर्टेन, दैट्स हाउ यू डू आई थिंक, राइट? So that because of that heavy log it will that will clear, yes, that is done in those, in many, in few places, not only here, Maharashtra में also I have seen that, वो महाराष्ट्र में भी होता है कि लेकिन नॉर्मली लेवलिंग बोर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज जो वहाँ के लोकल एरिया में जो भी अवेलेबल है मटेरियल उसके हिसाब से भी उसको कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे स्मॉल फार्म्स के लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अब यही काम अगर लार्ज फार्म में करना है तो देन ही हैज टू हैव समथिंग, सो इन दैट केस दिस कैन बी यूज्ड। ओके, नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवलर्स जो ट्रैक्टर ड्रॉन है, ठीक है। नाउ लेवलर्स अगेन ट्रैक्टर ड्रॉन, पावर टिलर ड्रॉन, बुलक ड्रॉन टाइप्स भी आपने देख लिया है, ठीक है। एंड बाकी जो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये सारे ट्रैक्टर ड्रॉन लेवलर्स है, ठीक है।
एंड उसमें बॉक्स स्क्रैपर भी है, आप यहाँ देख सकते हो। ये बिल्कुल टेबल टॉप फिनिश जैसा होता है ना, उस तरह का फिनिशिंग देता है ये, ठीक है। एंड जनरली ये जो मैं इक्विपमेंट ये तब दिखा रही हूँ, मोस्टली एग्रीकल्चर में ये यूज नहीं होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, ओके। बट यस, अगर कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं ऑन ए ह्यूज स्केल, देन डेफिनेटली वन ऑफ दीज कैन बी यूज्ड टू लेवल द लैंड, ठीक है। बॉक्स स्क्रैपर एज यू कैन सी, ये बिल्कुल टेबल टॉप फिनिश होता है। ड्रैग स्क्रैपर्स, ओके, एंड स्क्रैप प्लेन स्क्रैपर्स एज यू कैन स्क्रैपिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ता है इट विल कीप ऑन स्क्रैपिंग द सॉइल, एज यू कैन से बिल्कुल फिनिश प्लेन लेवल हो गया है। एंड दिस एक्स्ट्रा वाला जो आगे जाके कहीं पे फिल करना है तो दैट दे विल बी यूज्ड टू फिल, okay. Different types of scrapers are there: scrape plane, drag scrapers, box scrapers, etc. और levelers with rippers, as you can see, ये इसमें rippers क्या है, ये जो blades है ना बिल्कुल soil को rip करते हैं, ओके। रिप करने के बाद जब ये मूव करता है ना, सो उससे क्या है, थोड़ा लूजन हो गया सॉइल रिपर्स की वजह से, एंड देन व्हेन इट मूव्स इजीली वो स्मूदन कर देता है सॉइल को। सो लेवलर्स रिपर अटैचमेंट आल्सो कैन बी यूज्ड वेयर सॉइल कॉम्पैक्शन ज्यादा है उस एरिया में, इन दैट केस दे कैन बी यूज्ड। नाउ अभी सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट लेवलर है दैट इज बीइंग यूज्ड करेंटली इज द प्रेसिशन लैंड लेवलर। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, एंड कई सारे जो हम लोग बोलते हैं ना कि रोड्स ले करना है या ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना है, इन ऑल दोस केसेस द लैंड लेवलर्स दैट आर यूज्ड करेंटली वो लेजर के ही है, प्रेसिशन लैंड लेवलर्स ही है। इट यूजेस द लेजर्स टू अंडरस्टैंड कि कितना लेवलिंग सही हुआ कि नहीं, ठीक है। सो टू प्रोवाइड डिजायर्ड ग्रेड ईदर लेवल और जेंटली स्लोपिंग ऑल्सो दिस कैन बी यूज, एंड यहाँ पे 120 HP ट्रैक्टर should be is required. Laser leveling systems are these are commonly used in agriculture applications in Australia, Japan, and United States. And using laser leveling results in much more level field because accuracy can be improved by as much as 50% compared with the other systems. Okay. A laser transmitter, ये laser transmitter farm के एक तरफ वो सेटअप कर देते हैं दैट कीप ऑन ट्रांसमिटिंग द लेजर बीम, एंड जो ये लेवलर है, ओके, उस लेवलर के ऊपर एक रिसीवर हम लोग अटैच करते हैं। सो लेजर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स अ लेजर बीम विच इज इंटरसेप्टेड बाय द लेजर रिसीवर माउंटेड ऑन द लेवलिंग बकेट, ओके, इस बकेट के ऊपर। This is called as a bucket. The control panel mounted on the tractor, okay, interprets the signal from the receiver and raises or lowers the bucket, okay. So इसके हिसाब से जो रिसीव कर रहा है वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं, उसके हिसाब से वो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। सो अकॉर्डिंगली वो जो सॉइल को स्क्रैप करना है या जहाँ पे नीचे जा रहा है, इसका मतलब वहां पे अनडिलेटेड, सो ये सॉइल जो निकाला वहां डाल दो उस तरह से। सो दैट वे in this way the soil gets shifted to the right places to make the entire field level, okay. And this is one of the latest methods that is currently used लेवलर्स में, ये है, ठीक है। इतना ही है लेवलर्स का, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स, ये आपके इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सो बेसिकली फर्स्ट वी लुक एट द ट्रैक्टर का हिस्ट्री कैसा है। सबसे पहले द वर्ड ट्रैक्टर अपीयर्ड फर्स्ट ऑन रिकॉर्ड इन पेटेंट इश्यूड ऑन ए ट्रैक्टर और इंजन इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एच हैरिस ऑफ शिकागो। After that 1906 में सक्सेसफुल गैसोलीन ट्रैक्टर was developed और introduced by चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट एंड चार्ल्स एच पार ऑफ चार्ल्स सिटी आयोवा, वो भी यूएस का ही है। एंड सबसे पहले 1908 में फर्स्ट विन्नीपेग ट्रैक्टर ट्रेल्स वेर हेल्ड, वो यूज करना शुरू किए हैं। एंड 1911 में फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड एट ओमाहा नेब्रास्का, ठीक है। एंड ये तो रेगुलर वाला। नाउ पावर टेक ऑफ ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1919 में, दैट इज ट्रैक्टर से भी जो पावर जनरेट होता है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द मशीनरी so that can be worked. So PTO shaft जो है that was developed here. After that diesel engines उसमें introduce किए हैं, ये सब हुआ है। 1960-61 में पहली बार ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग was started in India by the first manufacturer Messrs. आइशर गुड अर्थ, आज भी है, आइशर मोटर्स के नाम पे है आज, ओके। एंड बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में वो, ठीक है। आफ्टर दैट
ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, टी एंड एफ, टीएफई जो आज भी दिखता है, मैड्रास मोटर्स, हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स, एस्कॉट ट्रैक्टर्स, इंटरनेशनल हार्वेस्ट, ऐसे कई सारे नए नए मैन्युफैक्चरर्स आए थे इंडिया में, ठीक है। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट है मेजरली वही, उसके बाद अभी उसी में डेवलपमेंट होता गया, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द ट्रैक्टर दैट वी सी टुडे, ठीक है। ट्रैक्टर इज a self propelled power unit having wheels or tracks for operating agricultural implements and machines including trailers, and it can be used as a prime mover for active tools and stationary farm machinery through powered takeoff shaft or belt pulley, that is PTO। earlier belt pulley से भी करते थे, that is that a belt sort of ऐसे घूमता रहता था and that would transfer the power, okay, but here in this case now PTO shaft एक rod की तरह ही रहता है, that would transmit the power to the this machinery, okay। नाउ हाउ डू यू सेलेक्ट, ये है ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, इसमें एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, क्लच होता है दैट विल चेंज द गियर्स, ट्रांसमिशन गियर्स दैट इज ओनली वन दैट ट्रांसमिट्स द एनर्जी, राइट, differential unit, final drive, rear wheels, front wheels, steering mechanism, hydraulic control and hitch system, brakes, PTO unit, tractor pulley, control panel, all these are the components of the tractor, ठीक है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना है सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स, हाउ डू यू सेलेक्ट द ट्रैक्टर्स, कि कौन से लैंड के लिए कौन सा ट्रैक्टर लेना है, कितना पावरफुल ट्रैक्टर लेना है। सी अंडर ए सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे एग्जाम्स में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओके। Under a single cropping pattern, it is normally recommended to consider 1 HP for every 2 hectares of land. So, in one, for example, एक 40 हेक्टेयर फार्म है तो उसमें 20 to 25 HP ट्रैक्टर वुड बी सूटेबल, जहाँ पे सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न है, एक ही क्रॉप आता है पूरे साल में। जहाँ पे क्रॉपिंग जैसे जैसे इंक्रीज होता है, हियर जनरली 1.5 हेक्टेयर per HP has been recommended where adequate irrigation facility is there and more than one crop can be taken. So here in this case एक 40 hectares land के लिए 30 to 35 HP tractor would be suitable. Okay, soil condition is soil with less wheelbase, higher ground clearance, okay, जो उसका height and low overall weight may work successfully in lighter soils but will not be able to give sufficient depth in black cotton soils. So accordingly उसका जो ground clearance and all that should be there, higher ground clearance etc, that would be suitable for lighter soils. So उसके हिसाब से select करना पड़ेगा. Climatic conditions for very hot zone and desert area, the air cooled engines are preferred over water cooled engines. So हमारे इसमें जो इतना हीट जनरेट हो रहा है तो दैट वाटर चलता रहता है. Similarly, for higher altitude, air cooled engines are preferred because water cooled engines are liable to be frozen at higher altitudes. So as per the altitude, hilly areas में वहाँ पे there they prefer air cooled engines rather than water cooled engines. Okay. And very hot zones में भी air cooled engines are preferred as than water cooled engines because उसमें से भी फिर steam generate होके वो और problem कर देता है, ठीक है। Repair facility, it should be ensured that the tractor to be purchased as a dealer at the nearby place with all the technical skills for repair and maintenance. Running costs, that tractors with less specific fuel consumption should be preferred over others so that the running cost may be less. Again, जनरली वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है बट अगेन बिल्ट यूसेज उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है। एंड इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू वो भी देखना पड़ता है कई बार। इन इंडिया 4 व्हील ट्रैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर फिटेड 25 to 80 HP। वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स आर फिटेड विद 8 to 12 HP। इस वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स क्या है, पावर टिलर से, ठीक है। दिस ऑल्सो नोन एज हैंड ट्रैक्टर और वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर। एंड पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया था 1920 में एंड जापान इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पावर टिलर्स ऑन ए लार्ज स्केल। एंड पहली बार पावर टिलर आया था इंडिया में 1963 में, वो भी जापान से ही आया था। एंड कई सारे पावर टिलर के ब्रांड्स है, इससे किसातो, कृषि, कुबोता, यानमार, मित्सुबिशी, ओके। एंड पावर टिलर्स में बी कॉल्ड अ सिंगल एक्सिल वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर दो ए राइडिंग सीट इज प्रोवाइड इन सर्टेन डिजाइन। कुछ डिजाइन में है सीटिंग वाला भी, लेकिन अदरवाइज जनरली इट्स नॉट देयर। एंड इंजन का देखें, ये है हम पावर टिलर एंड यही कहीं फ्लाई व्हील रहता है ना, सोच ओके।
यहाँ पे जो स्विच है, यही क्लच है उनका, इसी से वो रनिंग का उसका मैनेज करते रहते हैं, गियर चेंज एंड ऑल दैट। ओके। सो दिस इज द पावर टिलर, ये इंजन है, जनरली कम हॉर्स पावर का होता है। एंड दिस इज लिटिल बिट अबाउट द एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया किस तरह से है। एंड करेंटली इफ यू लुक एट जो लेटेस्ट मतलब 2020 का कुछ एक रिपोर्ट है, एंड इट वाज द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय नाबार्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है वो इंडिया में बहुत कम है। ओके। वहाँ पे है। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी लेस इन इंडिया फार्म मैकेनाइजेशन। ओके। एंड ये पूरा कंटेंट आपका जो डिस्क्रिप्टिव है ना उसके लिए है, बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, लिमिटेशंस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, suggestions how to improve farm mechanization in India, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यू कैन गो थ्रू दिस कंटेंट, एक बार आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है। एंड ये कुछ है, कुछ स्कीम्स के बारे में है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल फार्म मैकेनाइजेशन, लाइक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्होंने डेवलप किया था। एंड कस्टम हायरिंग सेंटर्स को डेवलप करने के लिए फार्म्स ऐप, फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप, लाइक हमारा ऊबर रहता है जैसे हायर करने के लिए कार्स को, राइट, उसी तरह से इसको भी ऊबर टाइप का ही माना जाता है फॉर ट्रैक्टर्स और फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी, जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं, द फार्मर्स कैन हायर द मशीनरी rather than buying purchasing, which is not feasible for the small and marginal farmers. They can hire these equipment or machinery and get their work done. So उसके लिए फार्म्स ऐप उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद एक और स्कीम लॉन्च किया था, एक्चुअली ये बहुत पुराना स्कीम है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एंड उसी को बहुत सारा चेंजेस लाते लाते दिस इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज अ पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, कितना सब्सिडी मिलता है, देखिए ये पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है। ओके। एंड दीज आर द टाइप ऑफ इक्विपमेंट, एक बार इट्स अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन का वो नहीं है। सो काइंडली आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट वुड बी 40% ओनली। आप देख सकते हो जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है, अगर SC ST या फिर मार्जिनल फार्मर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बेनिफिशियरीज है या विमेन फार्मर्स है, असिस्टेंस वुड बी 35 to 50% बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी, एंड नॉर्मल अदर बेनिफिशियरीज के लिए 25 to 40%। आप पूरा जितने भी टेबल देखोगे ना इतने में ही रहेगा। ओके। एंड कितना अमाउंट है देखिए, हर चीज का है इस टेबल में, एंड दिस ऑल यू कैन गेट इन द साइट ओनली। जो SMAM का साइट है ना, इसका साइट भी है, तो आप उसमें जाएंगे तो यूल गेट ऑल दिस डाटा कि अभी असिस्टेंट पैटर्न ऑफ असिस्टेंस कैसा है। ओके। Leave these questions, I'll give you the questions anyways. So this is all from my end today. So with this we have completed the agriculture engineering। एक मुझे देना है आपको जो टैबुलर फॉर्म है जिसमें मैंने सारे इक्विपमेंट या मशीनरी का मैंने इनकॉर्पोरेट किया था, वो एक टेबल में आपको दूंगी। Yes, any questions, queries? I have stopped sharing. If there are no queries, I'll wind up, and tomorrow we'll have MCQs का क्लास ही होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जितना अभी तक हमने किया है that we'll do entire 1 hour we'll be doing MCQs. Yes. Yes. No questions? No problem. We'll meet tomorrow. And अभी मैं PDF शेयर कर देती हूँ सर को, and he will share it in the group and all that.
सो उसके बाद प्लीज गो थ्रू दैट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज क्लास, सो दैट हम लोग क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर सकें, डिस्कशन भी हो, एक बार फिर से पूरा रिवीजन हो जाएगा हमारा अब तक जितना भी किया है। ठीक है, सो डोंट मिस द क्लास टुमारो। So yes, thank you very much once again. Please take very good care of yourself. See you all tomorrow then. Take care. Bye bye. Good night.